which I'm involved. Total 15 years. You got it. Okay. So working on different projects, working on VMware, NetApp storage, Puppet, Git is my daily, the tool which I'm using, and Terraform and Ansible. CI/CD not much, but we'll discuss CI/CD in one final go project now. I'm not sure about how many people are listening this now, but anyhow, I am just um, initially we do the classes in phase wise. What I mean is first it's a 45 to 50 days class, so every day we take 1.5 hour. First we do Git. The first day itself, I will tell you, I will show you the some basic commands, and tomorrow maybe we'll show you the actual uses of the Git integrated with the Puppet. So, but remember, we are my intention is not to explain the Puppet, but I wanted to show some, the real and frequently used Git commands. There are tons of commands. We are not bothering about that. I will show you what the frequently cover commands which I've been using from last 6 years. The commands are very few. Yeah, yeah, yeah. Home. Okay, very few commands are there, like 5 to 10, and which is frequently used here. Now come to the why we are not learning in depth of the Git, because the Git we don't need so many things in the Git, because primarily they use by the developers and DevOps people also using the Git. The main advantage of using the Git is yeah, you can integrate Git with other stuff. You can integrate Git control version with other things. You can integrate with CI/CD in AWS. You can integrate Git with GitLab. You can integrate Git with you know there are multiple like you can integrate Git with Jenkins. Now, so this is about our class. We are the first 2 days, maybe 3 days we go with the Git, and then we'll start the Ansible. So in Ansible we'll use AWS instances, which I will show you. 10, 15% or 20% we do graphical, 80% we do everything through command prompts. So sometimes initial stage we'll use the GUI, and then we'll go for the Ansible. Ansible maybe AWS instance, maybe local instance. Then we'll switch to the Terraform for the infrastructure. We'll go with the will integrate CI/CD. Will either I will use Jenkins or I will use AWS. Is also there are, as I said, right, there are multiple companies, yeah, maybe can tools which provide CI/CD pipeline. Actually, CI/CD has itself is a very big course, but very basic things people use regularly. I mean, regular stuff is very common. So we'll discuss that part also. So this is about course. So about myself, as I said, I'm still working in a company. So as this is recording, I don't want to tell the name. You can search in the LinkedIn. So yeah. So but just about myself, but the best thing if you want to find are the things about myself, you can go and check in the LinkedIn. So yeah, we'll start. Riyaz, just about yourself, and if you have any experience. And one more thing, one last thing. I think DevOps is suitable only for the serious guys. Don't expect that we join only 5 classes or 10 classes. Maybe even if you attend 50% classes, there will be no uses, no use if you do not put these commands or maybe tools into the hands-on. There will be no use because you will feel very boring these classes, because as I said we use 80% CLI, I mean CLI tools like Terraform, Ansible,
other Git, only 20% is a GUI. So serious, the interested candidates only can make a career in this. And sometimes you may need a little background. I mean, during our like end of the week, I may ask you to go and learn this thing from other sources. I mean, you need to add this. Now, um, last thing, DevOps has a plenty of job. If you can able to, yeah, we also learn about Terraform. That's our last stage. I mean, because I don't want to spend a lot of time for the infrastructure thing. First, we'll do Git, then Ansible, and then Terraform, and finally we'll go with CI/CD. That is also we use AWS code build and code commit concept. Okay. In other words, will you can use this training as a AWS DevOps engineer, but remember, instead of cloud formation template, which is same like a Terraform in AWS, we are not using it because Terraform can be used for multiple clouds like Ansible, AWS, Google Cloud or Microsoft Cloud. You can use Alibaba Cloud. That's the reason I bring the Terraform into the picture. Okay. Can you start describing about yourself so that I will get idea one by one? Riaz, you can start from here because I can see you on the first of this view section. Riaz, are you there? But please, I like you can ask the question, any kind of question, whether it's relevant or irrelevant, because please keep background noise. Okay. Okay. um, शायद नाउ आवाज कैसी आ रही इज इट क्लियर हेलो Yes, yes, your Hello. voice is pretty clear. Yeah, I'm mute. ओके नहीं मोहम्मद याकूब को शायद भाई नमाज से अभी लोग जा रहे हैं यहाँ से मेरे घर के पास ही एक मस्जिद है ठीक है रियाज आप अपने बारे में बताइए Yeah, this is Riaz here. I think I spoke to you on that day. I mean, on that forum, right? sorry guys I don't remember by name if I see you Uh, personally like maybe as I say, like as I said, that I have got 16 to 17 years of experience. Okay, got it. Yeah. ठीक है so I know about you even I think I know about Muhammad. Muhammad, I think this is the same person, right, Muhammad? Mahmood, you are talking about, or Muhammad? Mahmood, sorry. No, I'm really sorry about that. Mahmood. Yeah, Mahmood is the one who was saying you regarding your trips and all, right? Yeah. अस्सलाम Still वालेकुम just warahmatullahi one. wabarakatuh. Walaikum salam, bhai. Khairiyat. Alhamdulillah, Allah karam hai. Uh, Okay. Let me introduce me to others, other fellows also. This is Muhammad Mahmood, and I have worked in different fields like graphic designing, marketing, and all. And lastly, I just settled on AWS cloud computing. So I'm just eager to learn from Manzar sir the how the DevOps work. This is my objective to join Yeah. here. Yeah. That's Muhammad Yaqub. You can describe about yourself. Assalamu alaikum warahmatullah. I myself, Muhammad Yaqub. I It's graduated in a, 2014. it's a echo from, I think. Okay. Yeah, go ahead. So basically, I don't have any technical background. Okay. So I'm very new to this field. Um, in that case, you have to spend enough time. You hope because Yeah, DevOps inshallah. is a challenging compared to other courses. I mean, it's not programmatic. It's not a you don't need to write a program. The only thing is you should use you can able to use the existing tool. But
It's a bit. I mean, you have to spend enough time on. You have to invest your time. Then only you can make a good progress on this. Inshallah, I'll Yeah, try my best to cooperate with you, and I hope I'll get sufficient cooperation from your side also. yeah, and I suggest if you are sharing, keep yourself. I mean, all you guys as a one team, so that you can share maybe things. You can prepare a motivation for the writing certification. But certification is not very important. But you should have one certification. Your the AWS, maybe AWS or Azure, maybe Google Cloud, because which differentiate from others. Anyhow, who's others? I'm just going. Yeah, no, Muhammad Majid, right? Majid, you there? Assalamu alaikum. Walaikum This is salam. Muhammad Majid. I am from mechanical engineering background. Oh, really? Okay. I have been in printing business till now. Okay. I have to join in IT industry, so I have jumped in Okay. DevOps. Yeah. So, you don't have any other background experience, right? Yeah, I don't have. Yeah, guys. One more thing. Saturday, Sunday. I will suggest you guys go through a 1 hour or 2 hour video on Linux. Okay, Some things needed in the background, like you need to be learn. Can we learn Linux in 2 hours? You don't need all the commands to, but when you go through, you should be familiar from one of the background, like maybe Windows, Linux, or networking. So okay, in that case, things will be smoother. I mean, it will be very smooth. Otherwise, you have to keep adding the things in the middle. In other words, you should use your the weekends, Saturday, Sunday, especially during our classes. I will start every Monday new things, maybe new topic, maybe in that case, beforehand, before start Monday, I will give an instruction or maybe a link or maybe a website where you can find the things and practice on those things. So it will be easy for you. Yeah. sure. Yeah. One more thing, at least you should use your 3 years experience, or you have to more utilize your previous experience as a DevOps engineer. That will be easy. Anyhow, we'll keep discussing these things during the other calls as well. Yeah, Farhan, you can introduce yourself Yes, briefly. Assalamu alaikum. So my Walaikum name is salam. Farhan Sumbul, and I have now overall 9 years of experience in IT industry. So I was working in Hyderabad, but due to some reason, I'm basically from Jharkhand and currently joining this course from Delhi. So I live Oh, in really Delhi great. now, and I was part of PSF also earlier. Uh, Okay. my previous experience is in software testing, and I also worked on DevOps in the initial days, like CodeShape Mm-hmm. and Jenkins. I have implemented. I have Okay. also used like a little bit of Azure and little bit of AWS. Okay. And but now currently my job is little techno managerial in a government sector in government of India. Mm-hmm. So my I want to go back to corporate. That's the reason like I wanted to learn DevOps, and the reason I have joined this course. Mashallah, you already have a Jenkins. I don't know whether you use integrated any application with CI/CD, but if you already did those parts, especially integration part, because now people start using those things very widely. If you have that in your experience, in that case, you're already in good shape. Yes, yes. The thing is, like, I have got this break of 3 to 4 years in not so technical, but I have been managing all the technical projects in government. Uh, Okay. but now I need to get my hands on this DevOps. Yeah. Okay. Yeah, sure. To that, you do that because you're already in the same background, so it will be easy because you already know the things.
Okay. Um, you can utilize, but I don't suggest to use your 9 years experience as a DevOps. You have to divide it, your experience with like 4 years, 5 years, one profession, maybe anything. Then 5 years in DevOps. Right. In that way, it will be easy for you because 9 years DevOps mean I don't think people start using this even CI/CD or DevOps. It got popular from last 7 to 8 years back. I mean, it was very less Right, right. 10 years In fact, back. People, in 2015, I had started writing blogs for my company in Hyderabad about DevOps. So okay, I had started introducing DevOps, and I attended few of the workshops conducted by AWS in okay, Hyderabad. So that's how so my company was handling very small projects. So uh, this code ship and all, there was a Node.js project. I had implemented their CI/CD using uh, these online platforms. Like it was not on premise, but I was using the cloud platforms. uh, Farhan, I'm not sure how much you will get benefited, but because you are telling you already use Node.js because which is very popular JavaScript framework. You are already integrated with Jenkins. I think if you add Kubernetes in your profile, that will be interesting. But anyhow, we are not discussing neither Node.js nor Jenkins, but we'll integrate the CI/CD with the AWS code build and code commit part. Yes, Okay. yes. No, I'm expecting like your this class will give me some push Yeah, in but I terms. can say one. I can promise one thing. It will fill your gaps Right, right. Yes, yes. That's what my expectation is like. I am because doing you my may own hard work. Like I'm working. I'm you learning you every day you something. may you may for 60% familiar or 40% new things, but I promise one thing that the gaps which you were thinking like like Ansible part, I'm Yes, not yes. clear about Terraform, but those things maybe I can help you to fill your gaps. That I can promise from my side. Sure, sure. Inshallah. Yeah, inshallah. Yeah, other guy, Muhammad Mudassiruddin, if I'm not wrong. Hello. ठीक है, look like Mudassir is away. I'm not sure. Maybe he can able to hear us. Yeah, maybe he's having the issue with I think when the data engineering in semiconductor manufacturing company like embedded system, if I'm not wrong. I'm not sure about data engineering in semiconductor. It might be embedded system. But no hands-on experience. I'm outside at the moment. Will be able to respond via chat. No issues. But anyhow, uh, we use Linux as our basic platform. What I mean is we do not use much Windows. Okay, fine, no issues. Thanks, Mohammad Mudassir. He's responding in the chat. So you can use anything. I mean, you should have a laptop. Any, sorry, able to see my screen? Sorry, let me share my screen. Sorry, I was thinking No, that sir. I'm sharing my screen. Is it fine, right? Participant can see. Not visible, sir. Let's wait. It's depend on the network from person to person. Let me know if you can view my screen. हेलो किसी को नहीं दिख रहा मेरा स्क्रीन No, sir. I will share again. Share the screen. Entire screen or the window. No, let me share entire screen.
चाहिए मेरे नेट तो स्पीड है वेरी गुड इंटरनेट स्पीड नेट स्पीड टेस्ट वेरी गुड स्पीड ओके अभी भी नहीं देख रहा आप लोगों को हेलो नहीं है, still not visible. एक We मिनट can, मैं ये आपको बोलो yes, we can see your mouse cursor, sir, and एक बार सर rejoin कर लीजिए सर एक बार. हाँ मैं रिजॉइन कर दूंगा एक मिनट छोड़ो
Hello. Sir, we cannot able to hear you.
लगाओ ये लगाओ जरा क्या बोलते हो ये लगा के देखो जरा हेलो हेलो Yes, sir. सुनिए रही आवाज में आ रही. हेलो हेलो Yes, sir. We can hear you now. शायद अब मेरे को 2 अकाउंट से लॉगिन करा हुआ है, 1 मिनट। हेलो सर। मेरे को प्रॉब्लम आ रहा। हेलो। हेलो, और मेरी आवाज आ रही ना? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन यस आपका सर। स्क्रीन रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है शायद ब्लैक स्क्रीन आ जा रहा खाली। भाई 2 मिनट दो, मैं डेस्कटॉप विंडोज को स्विच हो तो मैं यूबुंटू से कनेक्ट कर रहा था मैं। ओके 1 मिनट, ज्वाइन मीटिंग, ऑलरेडी इन द मीटिंग। मैं यूबुंटू 20 डाला रिसेंटली। पहले जब वेब व्हाट्सएप ओपन करता था तो फास्ट ओपन हो रहा था। ठीक है, मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो लिनक्स टर्मिनल चाहिए था, तो ubuntu लिया हूँ। एक बार ट्राई कर। हेलो। Yes, sir. ठीक है, मैं पिन शेयर कर यस रहा सर। हूँ। शायद एक काम करो ना छोटा, मेरे को एक्चुअली मैं 2 अकाउंट से लॉगिन करा। दूसरे अकाउंट को भी स्क्रीन शेयर का परमिशन दे सकते हैं आप? हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. You can share ये the सेकंड screen. अकाउंट को दो, मैं 2 अकाउंट से लॉगिन करा, एक फोन से, एक Yes, डेस्कटॉप से। sir. Already you are co-host. नहीं नहीं नहीं, 2 अकाउंट से लॉगिन करा ना मैं, तो एक ही हाँ. अकाउंट को परमिशन है। Okay, now. एक मिनट फिर ट्राई करता हूँ। नहीं, वो एक्चुअली मेरे को व्हाइट बोर्ड का ही परमिशन आ रहा। Right now. ट्राई करता हूँ, अभी वही आ रहा है मेरे को। शेयर स्क्रीन,
तो पहले तो लॉगिन करता था मैं, व्हाइट बोर्ड ही आ रहा है। अगर व्हाइट बोर्ड देखा तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को मेरा? Yes. हाँ, एक ही इसका ही परमिशन आ रहा है मेरे को। शेयर स्क्रीन, सिक्योरिटी, शेयर स्क्रीन इनेबल, पूरा नहीं आ रहा मेरे को। Sir, कंटेंट already I allowed you why the multiple participants can share simultaneously. मल्टीपल, भाई 2 मिनट दो, मैक्सिमम 2 मिनट। मैं लैपटॉप स्विच कर रहा हूँ भाई, ये डेस्कटॉप की वजह से मैं थोड़ा प्रॉब्लम है। ये ऑफिस का लैपटॉप है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑडियो आ रही ना अभी? हेलो, Yes, sir. Yes. अभी Now we ठीक है can ना? see your screen as well. भाई एक्चुअली ऑफिस का लैपटॉप है तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है, नहीं शायद आज एक दिन गिट डाउनलोड करना पड़ेगा भाई विंडोज के लिए।
ठीक है भाई, हम ग्लिट काउंट आज एक दिन सिर्फ विंडोज पे करेंगे। जनरली गिट लिनक्स पे यूज करते हैं। सो एनी हाउ दैट सिर्फ एक टर्मिनल रहता है। इसका एक एडवांटेज क्या है विंडोज से यूज करने में, इसमें आप लिनक्स की कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अनदर वर्ड्स, ये जो गिट का जो टूल हम लोग जो डाउनलोड कर रहे हैं, ये लिनक्स का शेल के साथ आएगा। तो विंडोज पे करने का एक एडवांटेज यही है कि लिनक्स प्रोटेक्ट, ओके, next. Then which repository you are planning to use? Bitbucket. Huh? अभी तो हम गिट बकेट नहीं यूज करेंगे। यूज गिट फ्रॉम ओनली बैक, गिट फ्रॉम द कमांड लाइन फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। मैं आपको कैसा करूँ गिट, वो पहला वाला ले लीजिए हम आप। गिट, हाँ एक्चुअली ऑफिस का लैपटॉप है, सो गिट क्रेडेंशियल, ठीक है। चलो एनी हाउ थोड़ा थ्योरेटिकल स्टार्ट करेंगे। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा जूम वो सब चेक कर लेके आना चाहिए था। एनी हाउ, सो हम लोग गिट कंट्रोल वर्जन इसलिए यूज करते हैं। नाउ द गिट कंट्रोल वर्जन में ज़्यादातर केसेस में हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। यहाँ पर इतना याद रख लो, प्रोजेक्ट इज नथिंग बट ए डायरेक्टरी where your all codes or programs are placed in a single directory। एक सिंगल डायरेक्टरी में आपके जो भी सॉफ्टवेयर है हम उसमें रखने को ही प्रोजेक्ट बोलते हैं। नाउ द कम टू द क्वेश्चन, एक्चुअली गिट किस लिए यूज करते हैं। मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्ट में मतलब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, इन अदर वर्ड्स एक डायरेक्टरी बनाएंगे और वो डायरेक्टरी को गिट के कंट्रोल में देंगे। मतलब एक डायरेक्टरी, अब जितने भी डायरेक्टरीज यहाँ पर जितने भी डायरेक्टरीज है, हर डायरेक्टरी को गिट के कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। हम गिट का कंट्रोल किस लिए लेके आ रहे हैं। अब हम लोग एक टीम में 28 मेंबर्स काम करते हैं। 28 मेंबर्स ज्यादातर एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, फिर आगे बता रहा हूँ, एक ही डायरेक्टरी में काम करते हैं। मान के चलते हैं कि 10 लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल एडिट करने का इंटेंशन है, 10 लोग काम कर रहे हैं, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो 10 लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल एट ए टाइम नहीं चेंज करते। ज़्यादातर कैसे करते हैं हम लोग, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिमोट लोकेशन में रखते हैं। रिमोट प्रोजेक्ट बोलो या रिमोट डायरेक्टरी बोलो या रिमोट लोकेशन बोलो। अब रिमोट लोकेशन कुछ भी हो सकता। रिमोट लोकेशन दूसरे थर्ड पार्टी गिट लैब वाले देते, AWS वाले देते रिमोट लोकेशन। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाओ, ना अदर वर्ड्स एक डायरेक्टरी बनाओ। वो डायरेक्टरी में के कॉन्फ़िगरेशन हम लोकली हैंडल कर दे। तो मैं बता दूं, चलो बात आ गई तो मेरे पास कमांड्स भी है। मैं जो रेगुलरली यूज करता हूँ कमांड्स गिट के लिए, नोटपैड प्लस में है। ये लैपटॉप भी नया है बट कमांड्स तो अवेलेबल है थोड़े, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये गिट कमांड्स है। थैंक गॉड इसमें मेरा कंपनी का नाम नहीं है, बट एनी एक छोड़ दो। गिट ब्रांचेस के बारे में इज टू अर्ली टू डिसाइड, बट दीज आर द फ्रीक्वेंटली यूज कमांड। एक प्रोडक्शन ब्रांच, ये ब्रांच का नाम है, और एक मेरा खुद का ब्रांच। हम दो तरह के ब्रांचेस यूज करते हैं, मैं मतलब रियली बता रहा हूँ। तो जो भी पहले क्या करते हैं गिट चेकआउट प्रोडक्शन, बट एक इतना याद रख लो, हम हर चीज एक सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रांचेस के बारे में मैं भी नहीं बोलूंगा, बट इतना याद रख लो कि चेकआउट का मतलब आप एक डायरेक्टरी में चेंज जा रहे, प्रोडक्शन डायरेक्टरी में जा रहे। गिट पुल ओरिजिन, आप क्या कर रहे हैं, ओरिजिन मतलब
जहां रिमोटली एक डायरेक्टरी बनाया उसके चेंजेस आप पुल कर ले रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड से। बट मैं इसके बारे में प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। और एक क्या करूँ मैं, चेकआउट, मैं क्या कर लिया, प्रोडक्शन डायरेक्टरी में आ गया। कैसा आ गया, गिट चेकआउट कमांड। बट रिमेंबर, ये मुझसे रिजेंबल कमांड बता रहा हूँ। दिस इज समथिंग लाइक विंडोज, अगर आप विंडोज बैकग्राउंड से है, पावर शेल में है, तो मैं अब कहाँ पर हूँ, पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैं सी यूजर्स ये डायरेक्टरी में हूँ। इसमें एक डायरेक्टरी से, ये पूरे डायरेक्टरी से डी एल एस कमांड मतलब लिस्ट, जो पावर शेल में काम करते हैं, बहुत से डायरेक्टरी से। अब मुझे डायरेक्टरी में जाना है डॉक्यूमेंट कमांड प्रॉम्प्ट से, मैं क्या करूंगा, सीडी डॉक्यूमेंट, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ के फाइल्स अलग है, यहाँ पर फाइल कुछ नहीं है। मैं एक लेवल बैक जाऊंगा, सीडी बैक, एक लेवल बैक आ गया, मैं हाइड दिस वन, डाउनलोड्स में जाऊंगा। मैं कहाँ पर हूँ, पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एलएस मारो, डायरेक्टरी में जो भी डायरेक्टरी से बताएगा, सीडी चेंज, सीडी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, आई एम गोइंग टू डाउनलोड। हम कहाँ पर हूँ, मैं सी यूजर्स A110 डाउनलोड्स में हूँ, एलएस मारो, लिस्ट है, कितने फाइल्स है। ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट अगर हम रिजेंबल करना, मतलब अगर कोरिलेट कर रहा हूँ मैं, तो मैं एक ब्रांच में गया, समझो कि डायरेक्टरी में गया, बट प्लीज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रांचेस एंड डायरेक्टरीज, बट रफली मान के चलते हैं मैं एक डायरेक्टरी में गया। ये मेरा प्रोजेक्ट है, कहाँ का प्रोजेक्ट, रिमोट प्रोजेक्ट है। मैं क्या करूं, ये ब्रांच में जाके पूरे चेंजेस पुट कर लिया। ये ऐसा है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टरी में अगर मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ, तो ये डाउनलोड डायरेक्टरी में डाउनलोड कर रहा हूँ, ये सेम वैसी है। आप प्रोडक्शन ब्रांच में गए, चेंजेस पुल कर लिए, कहाँ के, प्रोडक्शन चेंजेस में, और फिर और एक डायरेक्टरी में चले गए, शेक एम। आप क्या कर लिए, प्रोडक्शन ब्रांच में पूरे नए नए चीजें आ गए, पुल कर लिए, आप मनादर ब्रांच के लिए मर्ज कर दिए। बट ये सब क्यों कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन, भाई अब 10 लोग काम कर रहे, 10 लोग एक ही फाइल पे काम कर रहे, तो कैसा काम करेंगे, व्हाट यू बेस्ट सजेशन। मैं डाउनलोड कर लूंगा, मैं काम करूंगा, मैं काम करने के बाद समझो सपोज मैं एक फाइल पे काम कर रहा हूँ, अगर हम लोग कैसा काम करेंगे, यार मैं गलत डॉक्यूमेंट, मान के चलते हैं यही फाइल मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, नहीं ये रिपोर्ट नहीं, नाम आएगा, भाई थोड़ा प्रॉब्लम है, लैपटॉप ऑफिस का यूज कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा डर रहा हूँ। ओके, मान के चलते हैं डेटा है, ये डेटा पे काम कर रहे हैं आप लोग, 50% काम कर रहे हैं, 10% काम कर रहे हैं और छोड़ दिए। अब दूसरा बंदा कैसा काम करेगा, टीम में 20 के 20 लोग एक ही फाइल पे कैसा काम करेंगे, उस वैसे सिचुएशंस पे ज्यादातर आपको 90 के 100% केसेस में आपको गिट ही काम में आएगा। तो सॉरी, गिट शायद डाउनलोड हो गया, अपनी गिट बैश चाहिए, बैश इस कमांड प्रॉम्प्ट है, मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ये ठीक है। साइज शायद ऑप्शन में मिल जाएगा, शायद विंडो लुक्स टेक्स्ट विंडोज 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 टर्मिनल एक्सटर्मिनल बैकग्राउंड। आप लोगों को ये दिख रहा है, बहुत छोटा है नहीं, नहीं इट्स ओके। हेलो, हाँ नहीं सही है। भाई मैं गिट क्या है ना, विंडोज में कभी यूज नहीं करा। डिफॉल्ट भी विंडोज कॉलम 20 करंट साइज माउस, मुझे टेक्स्ट साइज चाहिए, ओके स्मूथिंग सेलेक्ट, एक मिनट, हाँ आ गया भाई, 12 डालूं, शायद 12 या 14 डालेंगे, अप्लाई, ओके ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। सो ये शेल है, बट रिमेंबर दिस शेल इज प्रोवाइडेड बाय गिट, एक गिट कमांड प्रॉम्प्ट है, एंड इसका ये आप लोग अगर विंडोज लैपटॉप भी है, विंडोज डेस्कटॉप भी है, इस पे पूरे लाइनस के कमांड चलेंगे। ओके
क्लियर, CLER क्लियर, कंट्रोल एल मारे तो भी क्लियर हो जाएगा। PWD लिनक्स की कमांड से, LS लिनक्स की कमांड से। ठीक है, हम लिनक्स बैश शेल विच इज कॉल्ड एक्चुअली शेल, ये जो प्रॉम्प्ट है ये शेल है, दिस डिफरेंट फ्रॉम द विंडोज। ये प्रॉम्प्ट में हम गिट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी फाइल्स है, ये फाइल्स बाय डिफॉल्ट गिट के कंट्रोल में नहीं आते। तो मैं फिर बता रहा हूँ, दोस्त एक डायरेक्टरी बना लो आप। मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, डायरेक्टरी मानूंगा गिट प्रोजेक्ट 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 फॉर AWS। मेक डायरेक्टरी इज वेरी इजी, इट्स जस्ट क्रिएटिंग ए डायरेक्टरी। यहाँ पर जो आपको एक डायरेक्टरी मिलेगा, होना है तो मैं GUI से जाके बताऊंगा। सी में जाइए, सी या दिस PC, ये यूजर रहेगा यार, ठीक है आ जाएंगे। यूजर्स में थाउजेंड्स, यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाया मैं, सी यूजर्स या गिट प्रोजेक्ट फॉर AWS, ये डायरेक्टरी है। अगर तो हम जो भी काम करेंगे यही काम करेंगे, मतलब जो भी फाइल बनाएंगे कोडिंग के लिए इसी लोकेशन में बताएंगे। लोकेशन क्या है, मैं अभी वो डायरेक्टरी में नहीं गया, आई एम जस्ट चेंजिंग द डायरेक्टरी। सो एक अच्छी बात क्या है बोले तो ये लोकेशन बताएगा, मतलब ये टूल की अच्छी बात क्या है, आप कौन सा डायरेक्टरी में है एट प्रेजेंट। तो अगर आपको कंफ्यूजन है, ऑलवेज PWD मारिए, दैट्स द बेस्ट थिंग, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। द कमांड आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, भाई आप डाउट है तो पूछिए। मतलब ये अपना प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो भी फाइल्स रहेंगे वो गिट के कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट गिट स्टेटस कमांड है, ये बोलेगा दैट्स ओके भाई, आप एक डायरेक्टरी गिट के कंट्रोल में मान लिए, बट ये अभी एक रिपोजिटरी नहीं है। एक डायरेक्टरी को अगर गिट के लैंग्वेज में हम रिपोजिटरी बोल सकते हैं। रिमेंबर, रिपोजिटरी इज नथिंग बट अ डायरेक्टरी विच इज कंट्रोल और विच इज अंडर गिट कंट्रोल। गिट एक कंट्रोल वर्जन है इसके। मैं जैसा जैसा आपको लैब या कमांड्स बताते जाऊंगा। कंट्रोल वर्जन मतलब ये मल्टीपल पीपल, 100 पीपल एक प्रोजेक्ट पे एट ए टाइम काम कर सकते। दिस इज ओनली जस्ट फॉर दैट एडवांटेज भाई। और एडवांटेजेस है स्नैपशॉट एडवांटेज, रिस्टोर करना, बहुत सी चीजें हैं, फिर स्लोली मूविंग। ये बोल रहा ठीक है, आप तो डायरेक्टरी बनाए बट ये रिपोजिटरी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये लिख दिया गया, अगर तुम ऐसे गूगल में मारे, ये बोलेगा आप एक कमांड इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस्तेमाल मतलब एक कमांड मिस कर दिए, क्या, इनिशियलाइज करना। गिट को इनिशियलाइज, जो भी डायरेक्टरी को आप प्रोजेक्ट में लेके आना चाह रहे उसे गिट इनिशियलाइज कमांड अंडर कमांड क्या है, गिट इनिट। फिर भी खाली बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप सिंपली गिट इनिट, इसका मतलब गिट इनिट, ये देखो गिट इनिट, आप बोले भाई गिट इनिट मारो, गिट गिट इनिट इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइजिंग एम्प्टी गिट डायरेक्टरी। कौन सा गिट डायरेक्टरी है, ये गिट के कंट्रोल में आ गया भाई। यहाँ पर हिडन डायरेक्टरी है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मतलब ये है, अभी जो भी फाइल यहाँ पर लिखा जाएगा, रखा जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा या डिलीट करा जाएगा, इट्स अंडर गिट कंट्रोल नाउ। बट रिमेंबर ये लोकल रिपोजिटरी है। इसका मतलब क्या है, ये रिपोजिटरी यही है, रिमोट से नहीं आया। पर रिमोट से कब आएंगे हमने, मैं अगर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, शायद थोड़ा डिले हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, मेरे वजह से डिलेड होगा। तो जो भी फाइल है गिट, अभी अगर मैं गिट स्टेटस मारूं, वो बोलेगा आप मास्टर ब्रांच में विल डिस्कस अबाउट दिस, नथिंग टू कमिट, कुछ करने का नहीं है। अगर मैं ये डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी की चलेगा, मान के चले एक लेवल पीछे, मैं कहा हूं आई एम नॉट इन गिट कंट्रोल, अगर मैं आप गिट कमांड मारू गिट स्टेटस, ये बोलेगा भाई ये डायरेक्टरी तो गिट के कंट्रोल में नहीं है। बट रिमेंबर जो डायरेक्टरी पे बनाए वही डायरेक्टरी में काम करना।
फायदे क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। गिट कंट्रोल प्रोजेक्ट, हम एक फाइल बनाओ, टच या टच इज अ कमांड या कैट कमांड से भी आप फाइल बना सकते, ग्रेटर देन सिंबल बना के फाइल डॉट txt, फाइल में कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ। दिस इज वन वे टू राइट ए फाइल, दिस इज माय फर्स्ट फाइल, कंट्रोल डी मारो सेव हो गया। but easy and quickest ways to create a file, nobody will create a file in this way, but still you can create a file in this way। एक फाइल जनरेट हो गई, कहाँ जनरेट हो गई, pwd मारो, मैं ls मारो, ये फाइल हो गई। बट रिमेंबर, अगर गिट में, गिट रिपोजिटरी में, रिपोजिटरी इज नथिंग बट a directory which is initialized or under control by the git control version। ठीक है, एक फाइल क्रिएट किया मैं, अगर मैं गिट स्टेटस भाई ये फाइल हम क्रिएट करें, गिट स्टेटस मारे, ये फाइल बोल रहा भाई आप, मतलब गिट स्टेटस आपको कंप्लीट पिक्चर बनाएगा, वेयर आर यू नाउ, व्हाट डू यू मीन भाई। हम एक मास्टर ब्रांच में, किसी ने बंदे ने एक फाइल बनाया, क्लियरली बोल रहा है, इट्स टेलिंग समथिंग, somebody created a file, will call untracked file। what do you mean by the untracked file? now एक इमेज बताऊंगा मैं, तीन चीजें रहते गिट में, गिट इमेजेस, स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग भाई मैं सब बना के रखा था, सॉरी नो इट वाज ऑन माय डेस्कटॉप। गिट 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 गिट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे सर्च करना पड़ रहा। गिट स्टेजिंग मारेंगे, सॉरी, ओके। या गिट में तीन चीजें रहते हैं बहुत सिंपल, एक रिपोजिटरी जहां हम जो डायरेक्टरी क्रिएट करें, एट प्रेजेंट ये डायरेक्टरी मैं सॉरी, एट प्रेजेंट ये डायरेक्टरी मैं अपने लैपटॉप पे बनाया, इज ए लोकल रिपोजिटरी। और एक रहता स्टेजिंग एरिया। तीन चीजें रहते हैं गिट में, एक रिपोजिटरी, एक स्टेजिंग एरिया, ओके। वर्किंग डायरेक्टरी इसके बारे में छोड़ो, सो स्टेजिंग एरिया, अब मान के चलते हैं स्टेजिंग एरिया क्या है। यहाँ पर अनट्रैक फाइल, अनट्रैक फाइल मतलब अब एक फाइल बनाए जो गिट के कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ अपना एक ही मोटो है यहाँ पर, जो भी फाइल्स या डायरेक्टरी बना रहे उसको गिट के कंट्रोल में रख के, उसके एक बाउंड्री में रख के काम करना है, ओके। अगर आप सिंपली एक फाइल बना दी, कहाँ पर, रिपोजिटरी में, रिपोजिटरी क्या है, इज अ डायरेक्टरी, जस्ट अ डायरेक्टरी विच इज अंडर गिट कंट्रोल। रिपोजिटरी इज नथिंग बट ए डायरेक्टरी विच इज अंडर गिट कंट्रोल। फाइल्स क्या है, अगर एक फाइल आप जहां सिंपली जाके एक फाइल बना दी है, वो फाइल को हम अनट्रैक फाइल बोलते हैं। मान के चले आपने एक काम करना है, काम करना क्या है, समझो कपड़े या पेपर्स लेके, घर में पेपर्स लेके आके आप एक ग्राउंड में डालना है, और ग्राउंड आसमान में चले आते हैं। मान के चले ग्राउंड को हम एक स्टेजिंग एरिया, और ग्राउंड से पहले जो घरों में पेपर है वो अनट्रैक फाइल्स, अनट्रैक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ट्रैकिंग नहीं है, किसका ट्रैकिंग नहीं है, गिट का ट्रैकिंग नहीं है फाइल। तो फाइल को हम यहां से लेकर जाके स्टेजिंग एरिया में डालते, मतलब ग्राउंड में डालते। ग्राउंड, अज्यूम ग्राउंड इज द स्टेजिंग एरिया, और आसमान में जाना कमिट। तीन थिंग, स्निप टूल यूज करूंगा मैं, स्निपिंग टूल, सॉरी स्निपिंग टूल नहीं, पेंट यूज, ठीक है, स्निपिंग टूल यूज करेंगे। ठीक है, एक ये है, एक स्टेजिंग एरिया, एक कमिट एरिया। अब समझो ये ग्राउंड है, ये समझो घर में है, होम है, होम
और ये स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया नाम सिर्फ इतना ही रखो बिकॉज दैट इज अ टेक्निकल वर्ड एंड दिस इज योर फाइनल कमिट। जो अगर यहाँ पर एक फाइल बनाए, यहाँ पर जितने भी फाइल बनाए, ये यहाँ से स्टेजिंग एरिया में जाएंगे। स्टेजिंग एरिया में मतलब जो फाइल यहाँ पर बनाए वो अनट्रैक्ड फाइल है जो गिट के कंट्रोल में है। जब गिट के कंट्रोल में आ जाएंगे वो स्टेजिंग एरिया में आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको अगर ग्राउंड समझो, ये घर है, जो घर में अनट्रैक्ड है, ग्राउंड में आ गए, जो स्टेजिंग में आ गए, ग्राउंड से आसमान पे चले गए, मान के चलेंगे आसमान है, तो फाइनल स्टेज में है। 3 स्टेजेस रहेंगे आपका, लोकल या लोकल लोकेशन या अनट्रैक फाइल। यहाँ से जो भी फाइल क्रिएट करे, मॉडिफाई करे, वो अनट्रैक में रहेंगे। जब आप गिट के कंट्रोल में लेकर आएंगे वो स्टेजिंग एरियाज में जाएंगे और वहां से आप फाइनली आसमान में लेके जाएंगे, बट रियली इज नॉट द वर्ड। अब इसे स्टेजिंग एरियाज में कैसे ले आते हैं? गिट ऐड कैपिटल फाइल, अरे बैश कंप्लीशन काम कर रहा, स्टेजिंग एरिया में चलेगा। अब आई एम कंफ्यूज, मुझे नहीं मालूम स्टेजिंग एरियाज में गाना है। हर बार एवरी टाइम आप गिट स्टेटस कमांड यूज करने की आदत डालिए। दिख रहा ना भाई सबको है? हेलो? यस सर, यस सर, दिख रहा है भाई तो हम क्या करें, एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाएं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये। तो यहाँ पर जो भी फाइल्स रखेंगे ये प्रोजेक्ट में वो गिट के कंट्रोल में रहेंगे। अभी तक तो लाल बता रहा था, अभी ग्रीन बता रहा। इसका मतलब आप स्टेजिंग एरिया में हैं। सिंपल, आप ऐसे ही रिजेंबल करिए। स्टेजिंग एरिया मतलब गिट के कंट्रोल में आ गया। भाई प्लीज टर्मिनोलॉजी मैं आपको कल बताऊंगा डेस्कटॉप का फिक्स होने के बाद। थ्योरी थोड़ा बताऊंगा मैं। स्टेजिंग एरिया मान के चलो कि एक ग्राउंड में पेपर्स लेके आके ग्राउंड में डाल दिए, या फाइल लेके आके गिट के ग्राउंड में डाले। मान के चलें गिट का ग्राउंड है, जो गिट के ग्राउंड के पहले है वो अनट्रैक्ट है, तो गिट के ग्राउंड में डाल दिए। कैसा डालेंगे? ऐड कर दिए तो हो जाता, तो स्टेजिंग एरिया में आएगा। स्टेजिंग एरिया से आसमान में चले जाएगा, वो मैं पहले बाद में बताऊंगा। ये फाइल है, अभी सिर्फ स्टेजिंग एरिया में ही है, मतलब गिट के ग्राउंड में मुझे पेपर को आसमान में उड़ाने का है। भाई इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता अभी। गिट कमिट हाइफन कैपिटल ए मतलब सॉरी शायद वेटिंग फॉर एडिटर चूज एग्जाम्पल कंट्रोल सी। भाई थोड़ा सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में कर दिया, फिर बता रहा हूँ। गिट कमिट हाइफन एम और हाइफन ए भी ऐड करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट कमिट। मान के चलो ये कमांड मारते ही स्टेजिंग एरिया में है तो फाइल आसमान में चले आता, एज्यूम करेंगे, बट वो कौन से आसमान में जाता मैं बाद में बताऊंगा बॉस, नॉट नाउ। ठीक है, ये बोल रहा, ये सब तो ठीक है, आप फाइल चेंज कर दिए और आसमान में उड़ा दिए, बट ये सब ठीक है। हर ये सब करने से पहले गिट को अपना क्या बोलते हैं ईमेल एड्रेस और अपना कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। क्यों? हर गिट कमिट एक मेल के थ्रू जाएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी भाई, कुछ चीज़ मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। ये लैपटॉप ऑफिस का लैपटॉप है। कमिट कर दिया, आसमान में उड़ गया, बट इसका कोई मतलब नहीं बनता। व्हाट डू यू मीन? इससे हमें कुछ नहीं देखा कि कुछ सर्वर बना नहीं बना, या इंस्टेंस बना नहीं बना, S3 बकेट बना, कुछ स्टोरेज बना या कुछ बना। आप सिर्फ एक डायरेक्टरी बनाए, फाइल बनाए और आसमान में उड़ा दिए। इसका तब यूज में आते, ये किसी ना किसी चीज से इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसे पपेट के साथ इंटीग्रेट कर सकते, आप इसे CI/CD के साथ इंटीग्रेट कर सकते। CI/CD मतलब AWS के साथ इंटीग्रेट कर सकते, या जेंकिन के साथ इंटीग्रेट कर सकते, तभी इसका प्रॉपर यूज है। अभी हम कुछ नहीं करें, सिर्फ एक फाइल बनाए,
और फाइल को मैं कमिट क्रिएट करा, गिट के कंट्रोल में लेके आ, मान के चलते हैं ये फाइल में कुछ कंटेंट अपडेट करना है। अपडेट करने के बहुत से तरीके हैं। वी एडिटर इज अ एडिटर लाइक माइक्रोसॉफ्ट में नोटपैड कैसा है। ये वी एडिटर मारते ही आपको एक फाइल ओपन हो जाएगी विद एग्जिस्टिंग कंटेंट। मैं एंटर कर रहा हूँ, फाइल ओपन हो गई। ओके, ओ मारो, ओ मारते ही आप नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। ओ, ये थोड़े कमांड्स है, शायद जो मैं अभी क्लास में बोल रहा हूँ वो याद रखे तो भी एनफ है। आई जस्ट प्रेस लेटर ओ, गो टू द नेक्स्ट लाइन, एडिंग सेकंड लाइन, एस्केप मारो, शिफ्ट कोलन मारो, डब्ल्यू मारो, फाइल सेव हो गई। अब फिर बता रहा हूँ, ये जो क्लास में जो हम रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं वो कमांड्स आप क्या बोलते हैं एज चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शायद और एक थिंग, शायद आज का क्लास तो यूट्यूब में अपलोड मत करो, कल से करो शायद, केवल तो मैं लैपटॉप में है, थोड़े मेरे कंपनी के मतलब डोमेन्स वो सब दिख के आ रहे हैं, ठीक है ना शायद? Okay, sir. I noted. ठीक है, थैंक। बस मैं फाइल हो गई। अगर ये फाइल देखना है तो कैट कमांड, 2 लाइन्स आ गए। भाई हम क्या करें, फाइल क्रिएट करें, मॉडिफाई करें? मॉडिफाई करें कहाँ पर करें? गिट के रिपोजिटरी में करें और रिपोजिटरी में करें। इसका स्टेटस क्या मालूम है ना, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हम क्या करें। ठीक है चलो देखेंगे क्या करें। फिर मार रहा हूं मैं, हम मॉडिफाइड करें, गिट रिकॉग्नाइज करा के पहले ऑलरेडी फाइल एग्जिस्टिंग थी और मॉडिफाई करें। हम क्या करना चाहिए, गिट बोल रहा भाई कमिट करो, आसमान में उड़ाओ, मतलब ग्राउंड में ही है, आसमान में उड़ा दो आप सीरियसली मैं वही कमांड कॉपी करूंगा जो गिट बोल रहा। गिट ऐड तभी करेंगे आप फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट करेंगे। कमिट करो, कमिट हाइफन एम, इसलिए कि हम जब कभी भी कमिट करते हैं तो एक रीजन देते क्या करें। इसका कुछ ज्यादा कुछ सिंपली गिट कमिट भी कर सकते हैं। एम इज लाइक ए डिस्क्रिप्शन, क्या कर रहे हैं आप, जस्ट मॉडिफाइंग द फाइल। इसका कोई मतलब नहीं बनता एम के बाद जो भी लिख रहा हूँ, इससे जस्ट डिस्क्रिप्शन। मॉडिफाइड हाइफन ए हाइफन एम, या भाई हाइफन ए हाइफन एम। आप कभी भी मॉडिफाई करते, सॉरी एक सेकंड, एक्चुअली इस कंप्लेनिंग सर स्टेजिंग एरिया में नहीं गए ना? हम स्टेजिंग एरिया में कर दिया, मैं कमिट कर दिया। अच्छा मैं बताता हूँ आपको स्टेजिंग, मैं आपको शायद नहीं दिखा आपको, मैं थोड़ा फास्ट कर दी। ये जो दिख रहा ना, ये स्टेजिंग एरिया में कमिट करते आप स्टेजिंग एरिया में चले जाता। बट रिमेंबर अब कमिट करते ही नहीं, ऐड करते ही स्टेज मॉडिफाई करे तो ऑलरेडी स्टेजिंग एरिया में ही है। सॉरी बॉस। नहीं, अब पहली बार जब फर्स्ट फाइल बनाए थे ना। हाँ अभी देखो, इट्स नथिंग नथिंग टू कमिट बिकॉज यू ऑलरेडी कमिटेड। अच्छा बट ये कहाँ जा रहे, कमिट कर रहे ठीक है, मॉडिफाई कर रहे ठीक है, क्रिएट कर रहे ठीक है, जा रहे कहाँ पर, इसका कुछ फायदा क्या है, वो आज तो हम नहीं होगा, मतलब आज मैं आपको नहीं बता सकूंगा। क्यों बोले तो मैं आपको दूसरे सेशन में बताऊंगा। ठीक है चलो, ये फाइल्स बने, एक मॉडिफाई करे, कमिट करे। भाई मैं थ्योरी से कंफ्यूज नहीं करूंगा। सिंपली आप जब तक कमिट नहीं करते वो फाइल मतलब वो फाइल का कुछ क्या बोलते हैं, कुछ ज्यादा मायने नहीं रहता। जब मैं इसे दूसरे के साथ इंटीग्रेट करूंगा, AWS के साथ इंटीग्रेट करूंगा, या क्या बोलते हैं मैं या जेनकिन के साथ इंटीग्रेट करूंगा, तब इसका ज्यादा यूज में, मतलब ज्यादा फायदेमंद इस्तेमाल, मतलब आई कैन शो यू द यूज केस ओनली वंस if I integrate the Git with other things, otherwise there is no use of the Git। ठीक है
अभी तक तो सिर्फ यही मान के चलो कि हम कुछ कर रहे हैं, बट नॉट कंप्लीटली। भाई कुछ चेंजेस हुए, फाइन। मैं एक फाइल बनाया था कल, फाइल बना के चले गया, ये फाइल को और एक बंदा चेंज करा, तो चेंजेस क्या हुए कैसा मालूम है? गिट लॉग -p कमांड्स कहीं भी मिल जाते। भाई रिकॉर्डिंग आथर शेख मनाजर, ओके, ये डेट फाइल जस्ट मॉडिफाइंग द फाइल, ठीक है। शेख मनाजर ये Just a suggestion, maybe we can stop the recording. या भाई आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद द रिकॉर्डिंग ब्रो, कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ। Yes, yes. So please stop the recording. शायद थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग रोक पास करो। Okay.